Uh, Hi, good evening, everyone. This is Syed Mouzzam Ali. I'm working as a business analyst, and I have almost over more than a decade of experience. Uh, Today, I would like to talk about a few of the most effective time management skills. I know many of you and many of us are, a job seeker, maybe a working professional, or somewhere we need to manage our time. Okay, there are many things that we actually um, don't focus on, and that eventually leads to mismanagement of our time. So today I'll try to talk about few things maybe by which we can effectively manage our time. Okay, so let's begin. As you all know, Career Guidance Council is an NGO. Okay, it's a non-profit organization wherein, like me, there are a lot of volunteers who are working professionals from IT and non-IT background. We take out some time during our weekends and sometimes during weekdays as well to give seminars or webinars or offline sessions to job seekers who or fresh graduates who would like to start their career. So we, usually come up with a lot of such programs which helps the job seekers as well as freshers to say few of the frequent sessions that we conduct. Uh, how to write our resume or our CV. Okay, how to uh, face an interview, how our body language should look like when giving an interview, all the do's and don'ts before attending an interview, also how to search for a job, how to apply for a job, and there are a lot many things. Okay, few professionals, they take out time and they look out for graduates with some specific skill sets, and they train on them those skills as well, that will help them in leveraging their career and upskilling their career. So I'm also part of CGC. Like, there are so many volunteers who eventually take out their busy schedule and help the job seekers. Okay, so let's begin. My topic today is effective time management skills. Okay, if I talk about what is time management, see, in a layman's language, time management is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. Okay, everyone has got 24 hours. Okay, and it's up to us how we manage that time. Even a small kid has 24 hours, and a prime minister of India also has 24 hours. Okay, a a tycoon, business tycoon, he also has 24 hours, and a person who is doing nothing, he also has 24 hours. Now it's up to us how we utilize the time. Okay, so time management ensures the process of organizing and planning how to divide our time between different activities. We know when we start our day and when we end our day, okay, before we sleep, there are a lot of things that we usually do, and sometimes we need to plan ahead. Okay, what we are going to do today or what you're going to do tomorrow. For example, if you have your exams scheduled from next week, so you have to plan few things, right? You'll have to ensure that things are all aligned so that you don't uh, face any difficulties in reaching the venue and in writing the exams. There are a lot of other things. So in short, time management is a process of organizing and planning, okay, how to divide your time. Now, first and most important thing is we don't actually plan the things. Okay, we don't plan the things, and eventually we become part of somebody else's plan. Okay, this is quite alarming. When we don't plan our things, we eventually become part of somebody else's plan. So somebody else might utilize us, or somebody else might take out our time, and we run short of our own activities. So this is something where we need to focus. Okay, if you are planning and if you have something aligned properly, if you have something organized properly, then you can say, if somebody asks for your time, you can say whether you are available, whether you are available for
few minutes or an hour or so. So that's how you need to know. So first, you plan yourself. Okay, you organize yourself. You organize your activities. Okay, what you're going to do today, or what are the things that are in pipeline today. See, those activities that you have to do, nobody else will do it. If you know that this is an activity or this is a task that I need to do, nobody else will do, then you have to prioritize and ensure that you are doing that work on time. Okay, so you have to take that initiative. Nobody else will tell you that you have to do this or you have to do that, unless and until you are a kid. Okay, so it's all about organizing and planning how you divide your time between different activities. Now, if you talk about importance of time management, the time management helps us to prioritize our tasks. Okay, there might be one or two or multiple tasks that we need to do. Now, it's upon us how we prioritize our task. Okay, which one to do first, which one to do next. Okay, which one to do now, which one to do later. All these things we have to prioritize. If I talk about a student who has an exam tomorrow, and today, if he is going and attending function, then it's up to him whether he has already covered all the chapters of what all be he is expected to get questions from. If he is well prepared, then it's up to him. Okay, if attending a function gives him some comfort, maybe he can attend. But few students who don't prepare unless and until last minute, so they'll have to prioritize this thing, whether that function is really super urgent for them to attend, or maybe if they can skip and you take out some time. Okay, maybe they can revise what they studied, maybe they can reproduce or recall in terms of writing. Okay, and then they can eventually assess themselves. Okay, if he or she is comfortable, then he can attend the function or not. So it's all about prioritizing our task. Okay, what to do first, what to do second, and what to do next. uh, Unless until you don't prioritize, see, uh, some work will come from nowhere, and you'll be surprised. Okay, this is something that has come up, and you are not expecting this work to get done. Now you need to take out time, and the things you have already planned, they might get delayed. Okay, so you prioritize first thing. You prioritize first things which are super urgent for you. Okay, and which has to be done by you. Then you prioritize. Okay, align your work, which to, whatever you have. Maybe you can segregate your work in small uh, tasks. Maybe this is task one, this is task two, this is task three. This is how I'm going to do. See, I usually give a layman's example. If you are entering a vegetable market, okay, if you are entering vegetable market, don't just enter with an empty mind. Okay, first check from your home what things they need. Okay, what things they need, and then you it's better to carry a small paper on which you have jotted down all the items. That will really save your time. Okay, see, few things you cannot buy in the first attempt. Maybe you are buying those items. If you put it on the bottom of your carrier, maybe they get perished. Okay, maybe they get spoiled. So you have to plan, and you have to prioritize, even if you are going for a small purchase of vegetables in the market. Okay, so you have to plan. You cannot simply take as the things are coming. This will really help you. Try this out. Okay, try this out and see how you are organizing yourself, how you are managing yourself. Simply you are standing on few items which you don't want to purchase, but still you are standing, and still you are checking this and that. It's simply wasting of your time. Okay, and maybe if you purchase, if that was not only needed, maybe it's a waste of money as well. So when we talk about time management, we have to stick to few deadlines. Okay, this is the time for activity one or task one, this is the time for activity two or task two. It happens, sometimes your activities or your task gets prolonged. So don't give so much time to task on that your all the other tasks are still in the queue, still in the pipeline.
Okay, so if you would like to really manage your time, you have to prioritize, okay, your task, which one to do first and which one to do next, okay, so that we can ensure that we have enough time available to complete our project. Now, see, if you have say 5 hours and if you have decided to do 5 things, okay, maybe once you once you complete an hour and your task one is completed, you'll be happy, okay, so that you have 4 more hours for 4 more tasks. Now maybe task 2 might take just 15 minutes, so you save some time. You started with task 3, you completed, so eventually you are saving some time and you are doing something, or you are enhancing your uh, or you are refining your work that you did actually. Okay, okay, so my intention over here is to let you know कि भाई देखो टाइम कैसे यूटिलाइज करना है. If we have to do something, so we have to ensure that we are doing it in a proper way. जब तक हम चीजों को उनके हिसाब से नहीं करेंगे, ओके, जिस काम के लिए जितना वक्त लगेगा, if we don't manage that time, then our lot of work will get delayed. ठीक है, और फिर होगा क्या? Procrastinate, people will start delaying, उसको फिर टालना शुरू करेंगे, चलो ये आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप काम सभी अभी करने हैं एंड वी डोंट हैव टाइम, राइट? सो डोंट मेस अप द थिंग्स कि भाई चलो सब एक साथ कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे. ये एटीट्यूड से क्या होगा कि वी विल मिस फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है. Let me proceed. Okay. Work on time. Okay, so the quality of your work increases when you're not rushing to complete it ahead of a fast approaching deadline. I have seen one a drawing, okay, by a professional. Okay, eventually I forgot to add that image. Okay, a person was given 1 hour to draw, a horse on that, a rider was sitting, okay, holding an arm and arrow and everything. 1 घंटे में इतना समय था कि वो पूरा सा पिक्चर को ड्रॉ कर ले, उसमें कलर्स भी अच्छे डाल ले. तो उसने क्या किया, जिसको 1 घंटा मिला उसने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया, बहुत अच्छे से ड्रॉ किया. हॉर्स का फेस अच्छा लग रहा था, उसकी टेल बहुत अच्छी थी, उसके लेग्स एंड एवरीथिंग वेर इन शेप, और जो उसके ऊपर राइडर बैठा था ही वाज लुकिंग वेरी कंफर्टेबल, और बराबर शेप में था एवरीथिंग. ओके, अब यहाँ पर टाइम मैटर करता है. ओके, 1 घंटा टाइम मिला, उसने बहुत अच्छे से काम किया. अब हुआ क्या, वही काम एक ऐसे बंदे को दिया गया और उसे कहा गया कि भाई इसको हाफ एन आवर में करना है. ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने भी हॉर्स उतारा, उसने भी उस पे एक राइडर को बिठाया, उसके हाथ में भी एरो है, वो है. बट देन क्या हुआ कि हॉर्स की या तो एक टेल छोटी हो गई, उसका हेड मोटा हो गया, और जो उस पर राइडर बैठा था उसके एरो शेप में नहीं था, वो शेप में नहीं था, समथिंग दैट वाज मिसिंग. वो कलर्स भी बराबर से नहीं दिया, नहीं भर पाया. फिर यही टास्क एक ऐसे आदमी को दिया गया कि भाई इसको 1 आवर का जो टास्क था उसको 15 मिनट्स में किया जाए, ओके, या 10 मिनट्स में किया जाए. उसने भी जल्दी 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 में उसको ऐसे किया कि वो शेप कुछ का कुछ लगने लगा. अगर मैं ये कहूँ कि वो घोड़ा जाकर गधा दिखने लगा, तो इट्स अ फैक्ट, ऐसे ही होता है, राइट? नाउ माय पॉइंट ओवर हियर इज, व्हेन यू हैव सफिशिएंट टाइम, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दिस टाइम? 1 घंटा जब आपके पास था तो आपने क्या किए, पूरे 30 मिनट सोचते रहे कि ठीक है, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा. अब जब लास्ट आपके पास 15 मिनट्स बचे तो देखो फिर क्या होगा, राइट? So when you know what you have to do, when you know what you have to do that on time. ठीक है, कोई भी काम वक्त पर अगर कर लेंगे तो आपका वक्त बचेगा. Okay, if you do any time, sorry, if you do any work on time, then you'll really save time. Okay, और quality of work will really increase अगर आप उसको जो है ना अच्छे से करेंगे. Okay, the quality of your work increases when you are not rushing to complete it. Okay, ahead of a fast approaching deadline. डेडलाइंस क्यों होते हैं भाई, बोलो?
देखो हर आदमी को पता है कि उसको क्या करना है, हर आदमी को पता है कि उसको क्या करना है। जब हम लेट स्टार्ट करते हैं, जब प्रॉब्लम होते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से दैट मेनी ऑफ अस हैज अ हैबिट ऑफ सिंपली डिलेइंग द थिंग्स। आप अपने दोस्त को कहोगे कि भाई हम ऐसे करते हैं कि हम कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है, ये इवेंट ये वेन्यू है, यहाँ पर मिलेंगे 3 बजे, और आपका दोस्त वहां पर आ जाएगा 3 बजे, भला आदमी होगा तो आप वो जब पहुंच के आपको कॉल करेगा, जब आप फोन उठाएंगे, बस अभी निकल रहा हूँ या यहीं पर हूँ, करीब हूँ, पहुंच रहा हूँ। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, कुछ इमरजेंसीज होंगी, कुछ होंगी, मगर एवरी टाइम दिस माइट नॉट हेल्प, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एवरी टाइम। जब आपने उसको 3 बजे का टाइम दिया, तो व्हाई डिडंट यू प्लान? अगर आपके घर से वो वेन्यू पे जाने के लिए हाफ एन आवर लगता है, एटलीस्ट आप 35 मिनट्स पहले निकल जाते, थोड़ा 5 मिनट्स हियर एंड देयर, इट माइट यू माइट सेव। कभी ट्रैफिक हो जाएगी, कभी अनटोल्ड सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, मगर आप निकलोगे 2:50 को तो कैसे पहुंचोगे 3 बजे? तो देर इज समथिंग दैट यू नीड टू रीवर्क, ट्राई। देखो, ये मत सोचो कि भाई वो 3 बजे कहेगा, वो 3:30 पर आएगा, उससे अच्छा मैं क्यों जाऊं टाइम पर। दिस एटीट्यूड विल नॉट वर्क इन प्रोफेशनल कैरियर। ओके, योर वर्ड्स मैटर्स अ लॉट। अगर आपको कंपनी में आपके फॉर एग्जांपल 9 AM को रहना है, तो यू हैव टू बी देयर बाय 9 AM। अगर आप 9:05 पे जाएंगे तो वो एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, फिर क्या करेंगे, अरे ये बंदा तो बहुत है, इसको चलो लॉस ऑफ पे दे दो एक बार, जब ये सुधर जाएगा। ऐसे होता है प्रोफेशनल करियर में, राइट? तो ये आपका जो एटीट्यूड, जो ऐसी आपका पर्सनल एटीट्यूड था, देखो आपके प्रोफेशनल वर्क में कितना इम्पैक्ट कर गया, राइट? Try doing these things. I don't know how many people of how many among us, pray on time. I'm not here to tell you, but still, just think about it. You reach the when you reach the prayer hall when already the prayer might have started, right? Already when you are late or you are standing somewhere in the corner, somewhere in the last row, this might not help. Okay, you will not reap the benefits, right? आप अगर आप अगर कोई ऐसे सेमिनार हॉल में जा रहे हैं, वहां पर अगर आप लास्ट मिनट पे पहुंचे, तो वेयर विल यू गेट द सीट? यू वोंट बी एबल टू यू नो सिट इन फ्रंट और सिट इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटर। व्हाई? यू केम लेट। तो जो पहले आता है उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाता है, राइट? इसी इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम वक्त पर कर लो तो जरूर वक्त बचता है, और उस बचे हुए वक्त में आप काफी चीजें कर सकोगे। सबसे पहले तो आपको मिलेगा ये कि पीस ऑफ माइंड। ये कर देखें, मैं कह रहा हूँ, ये कर देखें, आपको वाकई पीस ऑफ माइंड मिलेगा व्हेन यू डू द थिंग्स ऑन टाइम। ओके, वरना फिर वही हाल हो जाएगा कि घोड़ा जाके गधा बन जाएगा, एंड थिंग्स माइट गेट something else। okay, what we expected, that might not be the result। okay, let's proceed। तो कोई भी काम वक्त पर करने की कोशिश करो, try, find out। okay, now there's a question, do you get enough time for all your activities or tasks? think about it। तो यहाँ पे चैट चैट बॉक्स में मैसेज करो, हमें कितने ऐसे हैं, वी गेट इनफ टाइम फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज, या ऐसा होता है कि यार वक्त नहीं मिल सका, मैं अगर थोड़ा और वक्त होता तो इसको और अच्छे से कर लेता। ऐसा होता है किसी के साथ? डू यू थिंक दैट कि भाई मुझे और टाइम मिलता तो मैं इसको और अच्छे से कर लेता था? ऐसा होता है? हैव यू थॉट अबाउट दिस एनी टाइम? एनी टाइम? नो? ओके, इट्स रिलेटेबल, राइट? मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे होता है, सोचते हैं कुछ और अच्छा वक्त मिल जाता तो ऐसा होता था, या राइट? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेनी ऑफ अस वी वॉच क्रिकेट, ठीक है, हम यहाँ बैठते हैं, वी आर जस्ट वॉचिंग द गेम, और वहां पर बेचारा वो भला मनुष्य जो भी वो क्रीज पर होता है, नाउ द पर्सन हु एक्चुअली वॉक्स इन एज एन ओपनर, और वो पता नहीं कि सामने वाला बॉलर कितनी फास्ट डालता है या कैसा स्पिन करता है, he has the ability to face fast ball or spin or everything, now he is walking, ठीक है। अब वो बंदा खेल रहा है, उसने कुछ रन्स भी किए हैं, बहुत कंफर्टेबली खेला है, ठीक है। अब क्या हो गया, 5 ओवर्स हो गए, अगर 20-20 गेम है फॉर एग्जाम्पल, 5 ओवर्स हो गए, अगर स्कोर जो है ना वहां पर सिर्फ अभी 30 है। अब यहाँ पर पीछे जो बैठे बैट्समैन, दे विल
फील द हीट, अरे भाई अब हम जाएंगे तो हमें तो चांस ही नहीं मिलेगा सेट होने का, जाते ही फर्स्ट बॉल पे हिट करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट। तो पहले जो बैट्समैन गया वो बेचारा वो विकेट गंवाने के चक्कर में शायद स्कोर अच्छा नहीं कर सका, ठीक है, स्लो करता गया। अब होगा क्या, नेक्स्ट 10-15 ओवर्स में अब हमें स्कोर और अच्छा करना होगा, ये टीम की स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। वैसे ही चलता रहेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, नाउ इन द लास्ट 2 ओवर्स, ओके, अब वहां पर बंदे ठहरे हैं, नाउ दे हैव टू हिट एवरी बॉल, दे हैव टू हिट एवरी बॉल, and you never know when your turn will be, whether you will get a chance to go first down or second down, third down. Okay, now see, now my point over here is whether you walk in as an opener with the very first ball, or you're walking in, in the last over, wherein you have to score 20 runs in 6 balls. What matters? Tell me, what matters? Now, here you cannot say that I did not get enough time. Now, this enough time is actually the time that you had before entering into the venue. आपने उस समय में क्या किया जब आपके पास काफी समय था प्रैक्टिस करने के लिए, दैट नेट्स जिसे कहते हैं, इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस वेल, ठीक है, इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस वेल, प्रेशर में कैसे खेलते हैं, ठीक है, कम समय में ज्यादा रन कैसे बनाते हैं, और व्हेन you don't get the right ball, then how you convert that wrong ball into good ball and reap maximum runs, ये कैसे होता है। ये जो इनफ टाइम की जब बात करते हैं, एक्चुअली वो टाइम वहां से स्टार्ट नहीं होता जब तुम क्रीज पर जाते हो, वो टाइम तुम्हारा पहले से स्टार्ट हो गया था, व्हेन यू हैड लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है, रिहर्सल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट के लिए या मॉक इंटरव्यूज के लिए। अक्सर बंदे जाते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू है लाइफ का, सीधा एचआर के पास, अब वो बैठा है बंदा, नाउ द एचआर इज आस्किंग टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो बंदा कभी बोला ही नहीं अपने बारे में किसी को, राइट, अपने बारे में, अब वो परेशान है, जस्ट इन 2 or 3 sentences he or she is winding up, hi, my name is Mouzzam and I have done my graduation in computer science and I'm a fresher, I'm looking out for this job, ऐसे थोड़ी होता है, यू हैव टू टेल समथिंग एटलीस्ट, ठीक है, 1 मिनट या 2 मिनट जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट। तो हाउ विल दैट हैपन, प्रैक्टिस, रिहर्सल। भाई आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, डू अ डेमो, ओके, सीधा ऐसे फोन सामने ले लो, उसको रिकॉर्डर पे डालो, एंड देन टेक योरसेल्फ अ डेमो, अपने आप का जो है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू टेल टू योरसेल्फ, ओके। अब आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किस तरफ देख रहे हैं, या फिर आप कौन सी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ओके 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 को कई लोग रिपीट करते हैं, लाइक ऐसे कोई लोग रिपीट फिलर्स करते हैं, कई लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस बिफोर द एक्चुअल इवेंट occurs, before you get that golden chance. Maybe you get a lot of chances, that doesn't matter whether it's a first chance or second or third or the next chance. What you have to do, you have to give your best. Now अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, आपका फर्स्ट इंटरव्यू है या 20th इंटरव्यू, सेम रिजल्ट आ रहा है, अरे मैं फर्स्ट इंटरव्यू में भी गया, दे सेड they'll get back to me, they never you know give a good answer, हम 10 इंटरव्यू दे दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। See, people will not tell you where you are going wrong, आप अपने आप को अच्छा जज कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि वो जाना है बैट्समैन, या वो फर्स्ट ओवर खेलेगा या लास्ट ओवर खेलेगा, वो तो मैच डिसाइड करेगा या कैप्टन डिसाइड करेगा, राइट। नाउ यू हैव गॉट इनफ टाइम अर्लियर, इफ यू हैव यूटिलाइज योर टाइम वेल, अब आपको मालूम है कि ना रॉन्ग बॉल को राइट बॉल में कैसे कन्वर्ट करना है, अच्छे रन कैसे बनाते हैं, दैट विल मेक द डिफरेंस, राइट। नो वन विल से दैट नहीं यार ये बंदे को लास्ट ओवर मिला तो बेचारा कैसे खेलेगा प्रेशर में, वैसे बंदों की गेम में जगह नहीं है, क्यों नहीं है, एवरीवन इज प्लेइंग अंडर प्रेशर, इवन द बॉलर इज बॉलिंग अंडर प्रेशर, वो कोई बंदा चैंपियन नहीं है कि ना मैं तो बस जो भी आ जाए उसे डाल दूंगा, वैसे एवरीवन इज प्लेइंग अंडर प्रेशर, बट व्हाट दे कैरी इज दे कैरी एक्सपोजर, दे कैरी experience, they carry a lot of practice, वो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। Now if I tell you
बिलीव मी, आप जो है ना, if I ask you how many of you know चार मीनार, ठीक है, चार मीनार के बारे में किसको पता है? All of us may say, yeah, we know चार मीनार. It's one of a great place, or one of the oldest place. It's a very nice structure and all that. कहेंगे. अब मैं ये पूछूंगा कि how many of you have been to चार मीनार? आपने अंदर से जाके कितने लोगों ने देखा, या उसका जो विजन है ऊपर से जाके आपने क्या उसको देखा, तो नहीं ये वाला तो नहीं है, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर था, हाउ मेनी ऑफ यू नो चार मीनार, सबने कहा यस, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क अगेन कि भाई कितने, हाउ मेनी हैव यू बीन टू चार मीनार, अंदर जाकर कितने कितनों ने देखा? चलो 20 में कहेंगे कि 5 ने, हाँ हमने देखा। So always remember, knowing is different from making use of. ठीक है? Knowing is different from making use of. Excel कितनों को आता है? सब कहेंगे we know Excel, वो कुछ होता है, वो formulas कुछ लिखते हैं, होता है। ये है knowing. How many of you got a chance to actually utilize Excel? आपने कुछ फाइल बनाई है, आपने कुछ ऐसी चीज लिखी है कि भाई हाँ मुझे एक्सेल आता है, मुझे पता है कि एक शीट का डेटा दूसरे शीट में कैसे लाते हैं, वीलुकअप कैसे लगाते हैं, राइट? यहाँ पर that will make the difference. Okay, so knowing is different from making use of. So step into the shoes of that skill. Okay, step into the step into the shoes of that particular skill, then you will come to know. भाई आप जब तक इंटरव्यू देंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि इंटरव्यू कैसा होता है। जब तक आप खुद का असेसमेंट नहीं करेंगे या किसी दोस्त से बात नहीं करेंगे, उसको टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको तो सामने कोई देख ही नहीं रहा है, राइट? नाउ दे आर आस्किंग, वहां पर भी आपको हेजिटेशन है, बोलने में हिचकिचाहट क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट प्रैक्टिस, right? So to manage time, even if you are job seekers, even if you are purchasing something, even if you are going out, even if you are meeting somebody else, you have to manage time effectively. सामने वाला क्या करता है छोड़ दो। जब तुम एक ही बंदे के साथ दो 2 से 3 बार मिलने की बात करोगे और वो टाइम पे नहीं आएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो अलर्ट हो जाएगा, अरे भाई अब तो टाइम पे जाना है वरना बंदा भड़क जाएगा, राइट? सो यू डोंट यू नो डिले योरसेल्फ बिकॉज़ अरे वो लेट आता है, मैं भी लेट आता हूँ। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ओके? डोंट गेट दिस हैबिट, अदरवाइज़ प्रोफेशनल करियर में आपकी बहुत इम्पैक्ट होगा, ओके? छोटे-छोटे गोल होते हैं हमारे। सो लेट्स मेक एनी गोल, इवन कि चलो भाई मुझे इस साल अच्छा जॉब लेना है। साल, मैंने एक बहुत बड़ी बाउंड्री दे दी है, 12 मंथ्स होते हैं साल में, राइट? अगर मैं उसको और थोड़ा-सा ये कर दूँ कि है ना, स्पेसिफिक कर दूँ, तो वी हैव टू, एवरीवन हैव टू मेक स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक कर रहा हूँ। अब मेरा गोल क्या है? आई वुड लाइक टू यू नो ग्रैब एन एंट्री लेवल जॉब ऑफ अ एनालिस्ट, और इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आईटी एनालिस्ट, जो भी है। तो नाउ यू आर डिसाइडिंग, और यू आर कीपिंग योर गोल टू अ स्पेसिफिक थिंग। अब आपको पता चल गया कि आपका गोल क्या है, राइट? सो मिया, यू आर मेकिंग अ गोल एज योर एज अ स्पेसिफिक गोल। मुझे एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्री लेना है, या मुझे मार्केटिंग जॉब में कुछ स्टार्ट लेना है। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग और व्हाटएवर इट मे बी, राइट? ये नाउ यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट, यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक गोल, राइट? जब आपका गोल सेट होगा एंड यू डिसाइड व्हाट टू डू, then you'll get a lot of things to align to your goal. Okay, now measure. Your goal should be measurable. When you have decided what your goal is, that goal should be measurable, right? अब आपको यहाँ से, अब हम ठहरे हैं 9 जनवरी में, अब यहाँ पर है, आपका ये गोल है कि you have to get a good job within 3 months. उस 3 months में आप क्या करने वाले हैं? Okay, if you're planning for a Java developer, आईटी की बात करूँ मैं, अगर आप डॉट नेट डेवलपर बनना चाह रहे हैं, डेटाबेस डेवलपर बनना चाह रहे हैं, या फिर कुछ पीएचपी ऐसे कुछ करना चाह रहे हैं, डेटा साइंस, या फिर बीट पाइथन, कुछ भी है, अब आपके पास टाइम है। नाउ यू डिसाइड हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट। आप फ्रेशर हैं, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो क्या बताओगे इंटरव्यू में? यू हैव टू मैनेज योर टाइम, और वो स्किल को अच्छे से लर्न कर लो, कोई भी स्किल हो। सॉफ्टवेयर में आपको, आप सीखेंगे पाइथन, मिलेगा जावा का जॉब, ठीक है, मगर आपने पाइथन को किस तरीके से अच्छे सीखा, वो आपको बताना है, ठीक है? तो योर
फर्स्ट थिंग इज योर गोल शुड बी मेजरेबल। भाई ये मैं 3 महीने में ये जॉब लेने के मैं काबिल हो जाऊंगा, राइट? आई शुड बी इन पोजिशन टू गेट दिस जॉब इन दिस ड्यूरेशन। उसके लिए आप आपने अपने गोल को स्पेसिफिक कर लिया, गोल को मेजर भी कर लिया, इतना टाइम लगेगा ये स्किल एक्वायर करने के लिए, राइट? और ये अचीवेबल भी है, ठीक है? आपने गोल सेट किया कि मैं चांद पर जाऊंगा, ठीक, ये गोल है, हो सकता है कुछ भी रख सकते हैं हम। इज इट अचीवेबल? अरे भाई उसके लिए क्या करना होगा आपको पता ही नहीं। ये गोल आपका स्पेसिफिक है, ये मेजरेबल है, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कौन से रास्तों से जाना पड़ेगा, ऑल दैट स्टफ, राइट? कौन, व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू। तो ऐसे गोल्स मत रखो जो अचीव नहीं कर सकते। मैं ये आई एम नॉट यू नो क्या कहते हैं, मैं आप लोगों का पस्त हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हो दैट शुड बी अचीवेबल, राइट? आप ये गोल आपका सेट कर रहे हो कि आई वुड लाइक टू बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी डाउन द लाइन आफ्टर 10 years। अचीवेबल है, 10 क्यों, 5 years में अचीवेबल है, बट यू हैव टू प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट? यू हैव टू रीच योर शॉर्ट टर्म गोल्स, तब जाके वो अचीवेबल हो सकता है। तो हर गोल अचीवेबल हो सकता है, बट यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ उस रास्ते पर। आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दैट गोल शुड बी रियलिस्टिक, right? वो goal should be realistic. Don't simply set a goal that is not realistic. है ही नहीं वैसा गोल। आप हो मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? और आप ऐसे गोल सेट कर रहे हो जो सिविल इंजीनियर इंजीनियर का गोल है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, वो रियलिस्टिक आपकी फील्ड से नहीं है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा मास्टर्स कर लेंगे फिर वैसा करना, हाँ, जब रियलिस्टिक हो जाएगा। ओके, तो अपने स्किल्स को देखो, अपने कैपेबिलिटीज को देखो जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, या हम उसको अचीव कर सकते हैं, या वो अडेप्ट कर सकते हैं, देन दैट गोल विल बिकम रियलिस्टिक, राइट? कोई बीकॉम का बंदा है, वो आईटी में आना चाह रहा है, ठीक है, उसका गोल है आईटी में जॉब करना चाह रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाउ हाउ विल दैट गोल बी रियलिस्टिक फॉर हिम और हर? आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, राइट? कोई भी एक दो कोर्सेज की अच्छी से ट्रेनिंग लेके यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट। कुछ भी दे दो कर लूंगा मैं, इसमें कुछ भी टास्क दे दो कर लूंगा, देन दैट गोल विल बिकम रियलिस्टिक। ओके, और टाइमली भी होना चाहिए, राइट? टाइमली भी आप आप यू नो एक किसान की बात करते हैं, तो आपने सुबह सुबह उठ कर तय कर लिया कि मैं इस साल मैं इतने बीज बोऊंगा और इतनी फसल होगी, ऐसे होगी, वो होगी। आप जब डिसाइड कर रहे हैं जब ना बरसात का मौसम है, ना बीज बोने से सही काम होता है, राइट? वो टाइमली भी होना चाहिए, राइट? तो these things you need to consider. So if you have any questions until now, just ping me. Just give me one moment, I'll be back. Just give me one moment. Okay, sorry for that. ठीक है, तो ये स्मार्ट टेक्निक याद रखो हमेशा, whenever you set a goal, ठीक है? छोटा होने दो, शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल हो, do a smart, it should be a smart goal, ठीक है? That goal should be specific, measurable, achievable or attainable, whatever you say, realistic, and that should be timely. Okay. 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 So let's proceed. We have very less time. I have got your, list of few tips for effective time management. See, set your goals correctly. ठीक है ना? आपको करेक्ट गोल्स सेट करना है। आप एक इंजीनियर हो या एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपने गोल सेट किया कि मुझे एसएपी में जॉब करना है, and I would like to begin my career as an SAP consultant something। देखो भाई, आपने ऐसा गोल सेट किया है that actually needs 2 to 3 years of domain experience। ठीक है, एसएपी में वो बंदों को लेते हैं भाई, तुम पहले 2 से 3 साल का रियल टाइम एक्सपीरियंस लेके आओ। एसएपी एचआर या फिर ऑरेकल ई बिजनेस एचआर फंक्शनल कंसल्टेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू,
एन एग्जांपल, वैसे आपको पोजीशंस टारगेट करना है, ठीक है, वो गोल आपका ठीक था बट यू डिड नॉट सेट इट करेक्ट, राइट? उसके लिए 2 से 3 साल डोमेन एक्सपीरियंस होना पड़ता है, और you'll have to get trained from SAP certified institute, वो वहाँ पे अच्छे, they'll take very hefty amounts, 3 lakhs 4 lakhs ऐसे लेते हैं, वो कुछ आवर्स कवर करते हैं, फिर सर्टिफिकेशन देते हैं, राइट? then you will be in a position, ऐसे गोल सेट करो which are smart goal, that should be a smart goal. So set your goal correctly. Okay, set goals that are achievable and measurable. We just now we talked about it. Okay, okay. My little daughter, she just saw me outside now. She's banging the door. Okay, prioritize wisely. ठीक है ना? You know what to do. भाई आप ऐसे प्लान करो कि आपको एक फॉर एग्जांपल एक अच्छा जावा डेवलपर बनना है, ठीक है? आप पहले सीख रहे हो डेटाबेस, फिर सीख रहे हो कुछ, फिर सीख रहे हो, ऐसे नहीं होता। Just see the list of skills that you need to acquire, maybe one after the other or hand in hand, ठीक है? आपको HTML सीखना होगा, maybe version 5 HTML5, CSS, ठीक है, CSS3 सीखना होगा, then कुछ scripting languages सीखना होगा like JScript, JavaScript और JSON, whatever it may be. अच्छा, ये होने का आप you are stepping into the Java, अब वहाँ पे oops concept देख रहे हैं। सी जावा से पहले अगर सी लैंग्वेज थोड़ा सीख लेते तो आपको लैंग्वेज समझने में आसानी होती थी। अच्छा भाई, प्रोसीजर क्या है, फंक्शन क्या है, ऑल दैट स्टफ, राइट? प्रायोरिटाइज वाइजली। ये प्रायोरिटाइज करने में अक्सर हम चूक जाते हैं, क्यों? वी डोंट आस्क द एक्सपर्ट्स, ठीक है? वो एक्सपर्ट से पूछते नहीं है वहां पे, इसलिए हम थोड़ा सा वी मिस द डेडलाइंस, वी मिस द राइट लॉजिकल सीक्वेंस। इसलिए you have to be associated with someone from that particular expertise, someone who carries the expertise, ठीक है? अगर आपका टारगेट है कि मुझे जावा डेवलपर बनना है, भाई कुछ ऐसे बंदों से तो मिलो जो जावा में जॉब कर रहे हैं, दे विल गाइड यू करेक्टली। अगर आपका एम है, ठीक है, वो हो सकता है वो 3 महीने में नहीं 6 महीने में अचीव होगा, मगर यू ट्राई इंटरेक्टिंग विद दोज पीपल, अपने रिलेटिव्स में होंगे, फ्रेंड्स में, नेबर, कहीं ना कहीं तो होंगे, नहीं है तो फिर लिंक्डइन पे होंगे, राइट? या यूट्यूब पर होंगे, या फिर कोई ट्रेनर होगा प्रोफेशनल, किसी एक से तो मिलो, हु कैन टेल यू कि भाई ये सीक्वेंस में जाओ, ये प्रायोरिटाइज थिंग्स लाइक दिस। और जब तक हम असेसमेंट नहीं करेंगे, बिलीव मी, if we are not assessing, if there are no frequent assessment, then when the actual assessment come, you will lack confidence, you will lack uh, the things that are required actually. मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर रीडिंग अ पेज, ठीक है, वो पेज को बंद करके फिर देखो उसमें क्या पढ़े, रिकॉल करने की कोशिश करो, एसेस करो अपने आप को, राइट? तो आजकल ऐसे कोर्सेस हो गए जहाँ पे आपको एवरी चैप्टर में असेसमेंट होगा, राइट? इफ यू आर ट्राइंग फॉर अ स्किल, एवरी स्किल वो सीखने के बाद असेसमेंट, दैट विल रियली हेल्प यू। गो फॉर असेसमेंट, गो फॉर असेसमेंट। अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो डोंट जस्ट लर्न, लर्न इट इन एफिशिएंट वे, learn it in an efficient way, that should really help you in the long run, right? एक बंदे को जानता हूँ मैं, he came from uh, a district, ठीक है, सिटी का बंदा नहीं था, डिस्ट्रिक्ट से आया था। अब now you can understand his language was not uh, you know good enough to give interviews and all that, ठीक है, बंदा इंजीनियर था, आया यहाँ पर, आने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कुछ नेटवर्किंग करेगा, उसे किसी ने सजेस्ट किया। वो बंदे को पढ़ने की बड़ी आदत थी, वो जाकर सीधा बुक्स लेकर आया, नेटवर्किंग किया, और जब पढ़ना शुरू किया, वो कुछ क्या कहते हैं, पहले ही नहीं पढ़ा। अरे क्या करें यार, ये तो दिस इज नॉट माय पीस ऑफ केक। देन एंड देन ही डिसाइडेड ये नहीं चलेगा। देन ही स्टेप इनटू, किसी ने एडवाइस किया डीबीए। अब वहां पर जाके किसी ट्रेनर से मिला, उससे मिला, देखने का, उसने कहा इसका कुछ एग्जाम होता है क्या। नाउ सी, नाउ ही डिड नॉट टेक फर्स्ट क्लास, बट ही इज आस्किंग इसका कुछ एग्जाम होता है क्या। there will be some certifications like admin 1 and admin 2. अच्छा, क्या है इसकी फीस कितनी है? What all books I need to read for this? Okay, do I need to get some practical exposure? So if you are targeting for any particular skill, तो सोचो उसके एग्जाम के बारे में। अगर इसका कुछ एग्जाम होगा, इसका कुछ सर्टिफिकेशन होगा, इंडस्ट्री वैल्यूज द सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स और सर्टिफाइड पीपल, ठीक है?
उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करो। ओके, तो प्रायोरिटाइज द थिंग। वो बंदा, आई जस्ट वांट टू फिनिश विद व्हाट आई वांट टू से, वो बंदा इतना अच्छा सीखा, सर्टिफाइड हुआ, सब हुआ, ठीक है, उसके सीखने का अंदाज ही अलग था। ही पेड फॉर हिज क्लास, ओ 3000 कुछ फीस थी, उसने कहा कि आई विल गिव यू 5000, बट आई वुड लाइक टू सिट इन मोर देन वन सेशन। आपके सेशन 3 होते हैं तो मैं 3 सेशंस में बैठूंगा। देन ही, यू नो, बिकॉज जस्ट टू गेट लर्न द थिंग्स or get familiarized with the technology. He got a chance, वो 2-3 बार जाता आता था, बैठता था, सीखा। अभी उसकी सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, उसने अपने दोस्तों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, उनको जॉब्स लगना शुरू हो गए। ये बंदा जब जॉब के लिए गया तो इसके 3 to 4 आवर्स का इंटरव्यू हुआ। अब वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, ये थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में बोल-बोल के कर रहा है। वो इंटरव्यू ने सीधे कहा, भैया अगर तुमको हिंदी अच्छी आती है तो लेट्स फिनिश इट इन हिंदी। ओके, वो क्वेरीज को उसको उसको बराबर लिख रहा है, बराबर समझा रहा है सिनेरियोस। नाउ गेस व्हाट, वो जो इंटरव्यू था, ही टोल्ड टू एचआर, ये बंदा मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू मेक योरसेल्फ skillful, people will start demanding you instead of you demanding for a job. They will demand you, ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, right? So learn the skills or learn anything that you think you want to be in that place. उसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उनको अच्छे से सीखो। Okay, that will really help you. Set a time limit to complete a task. जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी चीज के लिए कितना टाइम होगा, then we will end up in wasting. So avoid waste is one of a principle of agile, I can say. Avoid waste चीजों को अवॉइड करना है, वेस्ट चीजों को। तो उससे क्या होगा, एक तो काम खराब होगा और डिले होगा, राइट? एंड यू विल नॉट गेट द राइट गोल, यू विल नॉट रीच द राइट गोल। अवॉइड वेस्ट, सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क, टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क, ब्रेक्स लेते रहो, ठीक है, गेट सम एनर्जी, get some rest, and then restart. That will really help you. So these are few tips for effective time management. You have to organize yourself. Okay, आपको देखते ही लोगों को लगना चाहिए, अरे ये बंदे में कुछ बात है यार, ठीक है, he has something that maybe, चलो इस बात करते हैं, let's talk, ठीक है। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, ठीक है, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, रिमूव नॉन इसेंशियल टास्क और एक्टिविटीज दैट आर नॉट एट ऑल नीडेड। ऐसी चीजों को थोड़ा सा कट शॉर्ट करते जाओ, दैट विल मेक योर लाइफ बेटर, ठीक है। और चीजों को प्लान करते रहो। सी, वन हु डज नॉट प्लान प्लान्स फॉर अ फेलियर। आपने प्लान ही नहीं किया कुछ चीजों को, यानी आप ना अपनी फेलियर के लिए कुछ प्लान कर रहे हो इनडायरेक्टली, दैट्स द मीन। छोटी छोटी चीजों को प्लान करो, लेट द थिंग्स might not be fruitful, but at least try planning few things. Okay, ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स है। हम अक्सर ऐसे चीजों में अपने आप को पाते हैं, राइट, कि कुछ काम होते हैं सुपर अर्जेंट, करना ही करना है, दे फॉल हियर। ओके, दोज टास्क और दोज एक्टिविटीज विच आर अर्जेंट एंड विच आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस, हाई करना ही करना है, ठीक है। आपको स्टेशन पहुंचना ही पहुंचना है। अगर सुबह 7 बजे ट्रेन निकल रही है, यू हैव टू रीच देयर। अब उसके लिए क्या करना है, यू डिसाइड। ओके, वो काम आपका है। अब आप घर से निकल रहे हो 6:30 को, पता नहीं वो हाफ एन आवर का ड्यूरेशन है, मिल ट्रेन रुकेगी आपके लिए या फिर नहीं रुकेगी, यू डोंट नो। तो जो हाईली इंपॉर्टेंट या फिर हाईली अर्जेंट काम है, जो आपको लगता है कि आई हैव टू डू दिस नाउ, ये बिल पे करना है, नहीं पे करे तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, ऐसा कुछ है, वो काम को जल्दी निपटाने हैं। इनफैक्ट उन कामों को उतना लास्ट मोमेंट तक डिले करना ही नहीं है, राइट? वी हैव टू स्केड्यूल एंड एंश्योर दैट वी आर meeting the targets or we are reaching our goals, we are doing the things which we are supposed to do on time, ठीक है। कल कर लेंगे, आज शाम में देख लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें क्या होगा, डिले होगा, राइट? थोड़ी चीजों को थोड़ा सा अच्छा प्लान कर लो। देखो, अगर आप अर्जेंट आइटम अब के कर चुके हो तो देखो कि कल का कौन सा अर्जेंट काम है, क्या मैं उसके लिए आज कुछ कर सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग मे बी दैट विल कम कट शॉर्ट माय अर्जेंसी लेवल। उन चीजों को प्लान करो। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं लाइफ में
वो अर्जेंट होती हैं, इम्पोर्टेंट ही नहीं होती। ऐसे काम आप मत करो, लेट्स डेलीगेट, दूसरों को दे दो, जो आपके लिए आप समझते हैं कि ये अच्छे से कर देगा, डेलीगेट कर दो, ठीक है? तो देन यू फोकस ऑन द हाईली इम्पोर्टेंट एंड हाईली अर्जेंट वर्क्स, ठीक है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना अर्जेंट होते हैं, ना इम्पोर्टेंट होते हैं। बस ऐसे ही फ़ोन उठाया, चेक करते गए, अब किसका मैसेज आने वाला है, अब किसका आया, अब क्या है? देखिए, देखो अपना भी तो कुछ एक मैसेज रखो कि लोग इंतज़ार करें हमारे मैसेज का। ऐसा नहीं कि हम ही बस देखते चले, देखते I'm just telling you, okay? Don't waste time here and there. There will be many gossips, there will be many things that will, come in your life. But what you need to prioritize is your career, your goal, right? Maybe the short term goal or the long term goal. तो ये एरिया को जितना अवॉइड करेंगे आप, you'll be in a better position, okay? And you will also, reach your goals on time, right? Do you really save others time? अरे भाई हम दूसरों का टाइम कैसे बचा सकते हैं? You can. Being punctual not only saves your time, it does not waste others' time. आप दोनों ने दोस्तों ने बात की थी 3 बजे मिलेंगे, वो लेट पहुँचा, आप पहले पहुँच गए, तो उसने आपका थोड़ा-सा टाइम वेस्ट किया है, क्यों? He was not punctual. वैसे अगर आप पंक्चुअल नहीं है, तो समझ जाओ कि आप भी दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? So let's save others' time as well. Okay, let's save others time, let us start being punctual, जहाँ कहीं भी हो, wherever your presence is needed on a specific day, specific time, you be there on time, or try to be there before time, so that you can relax, so that you can feel more confident, right, more energetic, ऐसे कुछ करो ना, ठीक है? So that will help you, and that will help others as well. So these are the few things I thought I should share with you, maybe as a prospective job seekers or freshers, कुछ चीजें हमें जब तक दूसरे नहीं कहेंगे जल्दी समझ में नहीं आएगी, right? In that perspective, I thought maybe I can take a few things that might really urge you, that might really help you in attaining your goals. So let me stop here. If you have any questions, I'll try answering them, and we will wind up. Yes, please. Very good evening, Mr. Mouzzam. Mhm. And it was a really informative session on the time management. So Mhm. I have a little query about the problem that I'm facing. Like when I sit for study, then after studying for half an hour, I feel like, okay, now let me take rest. Mhm. Then I take a break, and then I forget uh, to start study again. Mhm. So like there is a kind of tendency to procrastinate, I think. Right, right, So right. can you suggest the ideas to improve it? Correct. See, it happens with many of us. Many of us. जिस पोस्टर में हम, जिस पोजीशन में हम बैठते हैं, we need to change that. अक्सर देखो, एक एक बात कहता हूँ मैं. Let me be very frank. जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जो ऑथर्स के पढ़ रहे हैं, they have taken, their years of time, years of experience they carry. वो सब लेकर यार उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, या जो भी कुछ कुछ समझाया है. So they have, actually made lot of huge efforts in bringing a book in front of us. हमें क्या मिल रही है? बनी बनाई बुक हमारे सामने, बट हम क्या कर रहे हैं? उसको लेट के पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे कैजुअल वे में पढ़ रहे हैं. इससे क्या होगा? उसकी कदर नहीं होगी. तो देखो, ऑथर के बारे में पढ़ो, कभी भी कोई बुक पढ़ने से पहले ये बंदा कौन है, कहाँ तक, हाउ ही रीच दिस प्लेस, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, मालूम होगा. अब नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द स्किल, जो भी स्किल आप पढ़ रहे हैं, वो स्किल के बारे में ये करो कि थोड़ा सा एक से दो ऑथर ले लो, या फिर एक से दो मटेरियल ले लो, देखो कौन अच्छे अंदाज से समझा रहा है, राइट? There will be many people who will train you, who will guide you, or who will make you learn. But the thing that matters is आप किसको अच्छा समझ पा रहे हो. Try to learn from that. Maybe you are reading, and you are not feeling comfortable. Change the author, or at least try to get the actual concept. कोई ऐसे बंदे से मिलो जो concept के बारे में जानता हो. Maybe you are spending a whole day, बस वो 10 मिनट में समझाएगा.
अरे यार वो सेमीकंडक्टर क्या होगा, ऐसे होता है, ये होता है, देखो ऐसे होता है, खत्म, समझा देगा, ये डिप्लीशन लेयर होता है, ये ऐसा होता है, ये वो ऐसा होता है। अब आप इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक, एक दिमाग में इतना सा बड़ा वो है, नहीं ये नहीं होगा मुझसे, ये तो मैं बस डे बिफोर एग्जाम ही देखूंगा, कुछ अच्छे से पढ़ लूंगा, क्लियर कर लूंगा, वहां जाकर क्या होगा, मैस अप अगेन, वी विल नॉट गेट द हॉर्स, वी विल गेट द डोंकी, राइट। तो अच्छे बंदों से मिलो जो एक्सपर्ट हैं, एटलीस्ट उनसे गाइडेंस लो कि किस तरह पढ़ें, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल, so that might help you probably. Yeah. Do you have any more questions? I need to wind up quickly. Uh, Thank I have you. one question. Please. Yeah, my question is like today I have, for example, today I have started, to complete 5 tasks, and yeah, the first task is completed, and second task is taking much more time. I think I need more, no, I more time to do research and all, and I do have the other 3 tasks in my list. So, what should be my next approach? Start decomposing. देखो, अपने एक बड़े टास्क को क्या करो, छोटे टास्क में डिवाइड कर लो, राइट। जब तुम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे तो देन यू विल बी एबल टू फिनिश। अरे भाई ये छोटा कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको एक बुक कंप्लीट करनी है, ओके, यू हैव 10 डेज, तो बुक 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 जो आपके दिमाग में रहेगा, तो 10 डेज भी हो जाएंगे, आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यू डिसाइड, ओके भाई ये 10 डेज में मैं ये करूंगा कि अगर इसमें 20 चैप्टर्स हैं तो एक दिन में 2 चैप्टर कर लूंगा, ठीक है। वो एक दिन में जो 2 चैप्टर है मैं उसको ये करूंगा कि जो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है उस प्रोडक्टिव टाइम में पढ़ूंगा। चलो मॉर्निंग अर्ली, जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वो नहीं होते, नाउ यू आर सिटिंग एंड यू आर ट्राइंग टू फोकस, वो होता है। आप ऐसे टाइम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए जहां पर आपको कहा जा रहा है कि भाई जाओ जल्दी से ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, बाहर कौन आया देखो, या फिर आपके दोस्त कॉल कर रहे हैं, चलो वहां जाते हैं। तो ट्राई टू मेक यूज ऑफ योर प्रोडक्टिव टाइम अर्ली मॉर्निंग, उठ जाओ जब अपने को डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, then you try focusing. अगर big task है, ठीक है, task 2 is taking longer time, try decomposing into small task. तो वैसे करके देखो, अगर वैसे हो सकता है तो that might really help, और you will gain confidence। भाई टास्क को आपने क्या क्या सब टास्क में डिवाइड कर दिया, या फिर उसको स्प्रिंट्स में, या फिर ऐसे कुछ डिवाइड कर दिया, नाउ यू आर एबल टू डू। और वो इंटरलिंक होने चाहिए, ठीक है, एक स्टोरी मैप बना दिया कुछ ऐसे कि ये यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट, मैं ये 2 कर लूंगा तो थर्ड इवेंचुअली ये लॉजिकल सीक्वेंस में आ रहा है, यू गेटिंग मी? So maybe that will help you. Yeah, I can say. Yeah, any more questions, sir? We have 2 more minutes. See, what I am telling you is, okay, to be frank, can anyone think how much time I might have, I took for this presentation? Can anyone think? Just a bit. सोचने में कुछ नहीं जाता है. 1 hour, I guess. Okay. Good. 1 घंटा. Good. Any more options that I can get from? 3 hours. Okay. ठीक है, और कुछ? तो इवेंचुअली आप लोग ये सोच रहे हैं कि 1 से 3 घंटे लगे, ठीक है, शायद 1 घंटे से भी कम हुआ होगा, इफ आई टेल यू, बट ये जो मेरा आई मीन जो प्रेजेंटेशन जो भी प्रिपेयर करने का टाइम था, एक्चुअली दैट हैज इन्वॉल्व लॉट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस। पहली चीज, राइट, अरे यार आज वो बंदे ने, युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए, हर बैट्समैन को आता है 6 लगाने। व्हाट मैटर्स इज बैटिंग अंडर प्रेशर, राइट। आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो नाउ, दैट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू डिड इन द पास्ट, व्हाट यू डिड अंटिल नाउ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेदर आई प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन इन एन आवर और 3 hours और इन अ डे, what matters is how many presentations did I prepare in the past, okay, how many presentations did I prepared in the past, or how much comfortable I am in elaborating on what all I listed down. तो ये मैटर करता है, right? So I'm telling you, if somebody is doing
exceptionally well. So really, there will be something behind that particular effort. So what I want you to do is, HR को कहना चाहिए, "यार, क्या इंटरव्यू था, क्या इंटरव्यू दिया बंदे ने." It's not that he was very much efficient at that particular time. Actually, he has practice. Rehearsal अच्छे से किया होगा उसने, right? अच्छे से rehearsal किया होगा, अच्छे से practice की होगी बार-बार, जभी जाके now he is able to do that, right? So I wish you all, a good and prospective career ahead. So do your best, whatever you do. छोटे से छोटा काम करो, but do it confidently and try to do it efficiently. ठीक है? I'm just telling you. I'm just telling you. कभी अपनी बाइक खुद धोकर देखो. हम ले जाते हैं, चलो 50 रुपीज या 100 रुपीज दे देते हैं, बंदा वो कर देता है, उसके बाद उसको कहते हैं यार ये साफ नहीं हुआ, ये यू ट्राई डूइंग दैट. एक बार अपनी खुद, अगर अपनी बाइक है या अपनी कुछ चीजें हैं, खुद एक बार उसको क्लीन करके देखो. नाउ यू डिसाइड क्या अच्छे से हो सकता था, इसमें क्या कमी रह गई, राइट? सिमिलरली कुछ एक्टिविटीज खुद से करके देखो जो हम समझते हैं कि भाई इसको इस तरीके से अच्छा करना चाहिए था. नो, यू ट्राई डूइंग दैट, देन यू विल कम टू नो कि भाई इसमें क्या एफर्ट्स पड़ते हैं, राइट? व्हेन वी से दैट ए बंदा इज वेरी गुड, ही राइट्स वेरी गुड प्रोग्राम्स, और कोडिंग बहुत अच्छी है, यू ट्राई राइटिंग अ स्मॉल प्रोग्राम. भाई ये सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड कैसा लिखते हैं, ठीक है, आज लिख कर देख लो. Now you'll get confident. अब यहाँ से now you start building, code, of 1,000 lines or more than that. Yeah. So let me end the session. It was really nice meeting you all virtually. I haven't seen you, you haven't seen me, but our voice have reached, our thoughts have reached. So I wish you all a a very good and bright career. So whatever you do, do it with your heart and do it confidently. And to do that, practice a lot, rehearse it, and well plan it, and do whatever goals you are trying to fix. Make a small, uh, what I can say, planning, and do it in a smart way, right? So that's it from me. Thank you all for joining, and keep joining the other sessions. Maybe you will meet more good speakers than me, and we have really wonderful speakers that will really help you, motivate you, and in reaching your career goals. Thank you, everyone. So let me end the session from here. Thank you all.